ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारां सर्वसंपदां लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 110 of the Ayodhya Kandam, which has 37 slokas. Pacifying Sri Rama, who had got angry with Jabali, sage Vashishta urges him to get himself consecrated as king, since from the Ikshvakus, the progenitor of his race, downwards, the eldest son alone had ascended the throne of Ayodhya, and because he was not only the eldest of his father's sons, but also the ablest too. आज हम दशाधिकम शततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 37 श्लोक है। वशिष्ठ जी का सृष्टि परंपरा के साथ ईश्वर कुल की परंपरा बताकर ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करना और श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। क्रुद्धम् आज्ञा रामं तु वसिष्ठः प्रत्य उवाचः जबालिरपि जानीते लोकस्य अस्य गतागतिम्। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, रघुनंदन, महर्षि जबाली भी ये जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। Perceiving Sri Rama to be angry, Vashishta too pleaded with him for Jabali as follows. Jabali also recognizes the departure of the human soul from this world and it returns to the mortal plane. Nivartayitu kamastu tvameda vakyam abravit imam lokasma utpatim lokanatha nibodame. जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने ये नास्तिकता पूर्ण बात कही थी। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। He, however, spoke to you as aforesaid, desirous as he was of persuading you to return to Ayodhya. Pray, hear from me about the creation of the world, O protector of the world. Sarvam salilam evasit prithvi tatra nirmita tatah sambhavat brahma swayambhuhu daivatah saha. सृष्टि के आरंभ काल में सब कुछ जल में ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। There was water alone in the beginning of creation. The earth was evolved in water. Next appeared the self-born Brahma along with the gods. Sa varahastato bhutva projahara vasundharam asrajaccha jagatas sarvam sahaputraihi kritatmabhihi. इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ही 12 रूप से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। Appearing as the divine bow, Brahma, who is the same as Vishnu, the protector, then lifted the earth out of the water into which it had disappeared, and in conjunction with his sons Marichi and others who had subdued their mind, evolved the whole universe. Akasha Prabhavo Brahma Shashasvato Nitya Avyayah Tasman Marichihi Sanjagye मारीचेहे कश्यपः सुतः। आकाश स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी हैं। उनसे मारीची उत्पन्न हुए और मारीची के पुत्र कश्यप हुए। The eternal, everlasting and imperishable Brahma sprang out of the ether, which is no other than Brahma, the absolute. From him came forth Marichi, and Kashyapa was the son of Marichi. Vivasvan Kashyapa Ajagye Manuhu Vaivasvatah Swayam
स तु प्रजापतिः पूर्वम् इक्ष्वकुस्तौ मनोः सुतः। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वेवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। Vivaswan, the sun god, descended from Kashyapa. Manu himself was the son of Vivaswan. Manu, for his part, was formerly a lord of creation, and Manu's son was Ikshavaku. Yasye ayam pratamam datta samriddha manuna mahi tam Ikshavakum ayodhyayam rajanam vividha purvakam. जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धिशाली राज्य सौंपा था, उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। Know that Ikshvaku to be the very first ruler of Ayodhya, to whom this prosperous earth was entrusted for the first time by the said Manu. Ikshvaku astu sutaha Shriman Kukshirityeva Vishrutaha Kukshera Tatmajo Vari Viro Vikukshiruddat Padyata. इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विकुशी हुए। Ikshvaku's glorious son from his past became known simply by the name of Kukshi, and from the lions of Kukshi, O prince, sprang up Gallion Vikukshi. Vikukshe astu Mahatejaha Banaha Putra Pratapavan Banasya cha Mahabahu Ranaranye Mahatapaha. विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। Vikukshi's son, on the other hand, was the mighty Bana, who was endowed with exceptional glory, and Bana's son was the mighty armed Anaranya, who practiced great austerities. Nana vrishtir babova asmin na durbikshah satam vare Anuranye Maharaje Taskaro Vapi Kacha Na. सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुए। So long as this Anaranya, who was a jewel among the virtuous, continued to be the emperor, there was neither a drought nor famine, nor was a thief to be seen in Ayodhya. Arananya Maharaja Pritu Raja Babhuvaha Tasmat Pritoho Mahatejaha Trishanku Utpadatyatha. महाराज अरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। From the lions of Aranya, O great king, they say appeared King Prithu, and from the said Prithu was descended Trishanku, who was possessed of great splendor. Saha Satya Vachanad Veeraha Sa Shariro Divam Gataha Trishanku Arabhavat Sunudhar Darnudhu Maro Mahayashaha. वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से सदे स्वर्ग लोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए। Due to the unfailing vow of Vishwamitra, the aforesaid hero bodily ascended to heaven. Trishanku's son was the highly illustrious Dhundumara. Dhundumara Mahateja Yuvanashchavo Vyajajayah Yuvanashchava Sutah Shriman Mandhata Sampadyata. धनुधुमार से महातेजस्वी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र श्रीमान मानधाता हुए। From the lions of Dhandumara sprang up Yuvanasva, who was endowed with exceptional glory. The glorious Mandatha was born as the son of Yuvanasva. Mandadhatu astu Mahatejaha Susudhiru Dapadyatha Susumdhera api putrau dvau Dhruva Sandhihi Rasenajit. मनदाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवा संधि और प्रसेनजित।
Of Mandata again was born the highly glorious Susandhi. Of Susandhi too there were two sons, Dhruvasandhi and Prasenajit. Yashasvi Dhruvasandute astu Bharato Ripusudanaha Bharatatu Mahabaho Arisito Nama Jayataha. ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यस्यैते प्रजिराजान उत्पद्यन्त शत्रवः हैह्यास लाजंगा च शूरश्च शशिबिन्दवः। जिसके शत्रु भूत प्रतिपक्षी राजा ये है तलजान और शूर शशिबिंदु उत्पन्न हुए थे। Bharata, for his part, a destroyer of foes, was the illustrious son of Dhruvasandhi, and of the mighty armed Bharata was born one Ashita by name, of whom the following tributary chiefs, that is, the rulers of the Haihyas and the Talajagnas, and the gallant ruler of Shashabindus came to be the enemies. Tamastu Sarvan Prativyuhyu Yuddhe Raja Pravasitaha सच शैलवरे रम्ये बभूव अभिरातो मुनिः। उन सब का सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा अस्ति को हार कर प्रदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। In spite of his having arrayed his enemies against all these, the king was routed and exiled. He therefore gladly took up his abode as an ascetic on a delightful and excellent mountain. Dvecha asya bharye gharbanyau babhuva turiti shrutihi tatra chaika mahabhaga bhargavam deva avarchasam vavande padmapatrakshi कांक्षिणी पुत्रम उत्तमम एका गर्भ अविनाशाय सपल्यै गरलम ददौ। सुना जाता है कि आस्ती के दो पत्नियां गर्भवती थी। उनमें से एक महाभागा कमला लोचन राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगवंशी च्यवन मुनि के चरणों में वंदना की और दूसरी रानी ने अपनी सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। In the course of time, his two consorts came to be in the family way, so the tradition goes. Desiring to have an excellent son, one of them, who was highly fortunate and had eyes resembling the petals of a lotus, sought the presence of and bowed down to sage Chavana, son of Brigu, who possessed the splendor of gods, while the other administered poison to her co-wife in order to destroy her fetus. Bhargavascha yavano nama himavantum apakshritah tamrishim sa abhyupagamya kalindim tvabaya vadayat. उन दिनों भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा अस्ति को कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। The sage named Chavana, son of Brigu, had betaken himself to the Himalayas. Approaching that sage, the said Kalindi, for her part, greeted him. Satam abhyavadat prito varepyasum putra janmani putraste bhavata devi mahatma loka vishrutaha. मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा, देवी, तुम्हें एक महामनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा जो धर्मात्मा शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर, अपने वंश को चलाने वाला और शत्रुओं का संहारक होगा। धार्मिकः च सुभीमचः वंशकर्ता त्रिसूदनः श्रुत्वा प्रदीक्षणं कृत्वा मुनिं तम अनुमान्य च पद्मपत्र समानाक्षं
पद्मगर्भ समाप्रभम ततः सा गृहम आगम्य पत्नी पुत्रम अजायत। ये सुनकर रानी ने मुनि की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। Gratified to receive her respects, he said to the queen, who sought from him a boon, ensuring the birth of a son to her. A lofty-minded son, widely known in the world, pious and most formidable, the founder of a dynasty and the destroyer of his foes, will be born to you, O queen. Hearing this benediction and going round the sage clockwise as a mark of respect, and taking leave of him and thus returning home, the queen brought forth a son who had lotus-like eyes and shone like Brahma, the lotus born. Sapatnya tu garastasyai dato garbha ajjidamsaya garena saha tenaiva tasmat sa sagaro abhavat. सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर्भ विष दिया था, उस गर्भ के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ, इसलिए सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। The boy was born along with that very poison that had actually been administered to the queen by her fellow consort with the intention of destroying the fetus. Hence, he became known as Sagara, literally with poison. Sa Raja Sagaro Nama Yaha Samudram Akhanayat Ishtava Parvani Vani Vegena Trasayana Imaha Prajaha. राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। King Sagara was he who, getting consecrated for a sacrifice on a full moon day or a new moon day, caused the ocean to be dug by his sons, 16,000 in number, causing fear to the people here by the speed of that digging. Asamanjastu putro abhuta sagarasye atinaha shrutam जीवने एवं सपित्रा तु निरस्तः पाप कर्म कृतः। हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंजस हुए, जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से निकाल दिया था। It has been heard by us that Sagara's eldest son, really speaking, was Asamanja, a perpetrator of sinful deeds as he was. He, however, was abandoned by his father even when he was alive. Anshumana api putro abhuda samanjasya viryavan Dilipoho asam ashumataha putro Dilipasya bhagiratah. असमंजय के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। Anshuman again, who was full of valor, was the son of Asamanja. Dilip was the son of Anshuman and Bhagiratha was the son of Dilipa. Bhagiratha kukustascha kukustastatha yena tu samrataha kukustasya tu putro abhut raguryena tu ragavaha. भगीरथ से कुकुत्स्था का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले कुकुस्त कहलाते हैं। कुकुस्त के पुत्र रघु हुए, जिनसे उन वंश लोग राघव कहलाए। Again from the loins of Bhagiratha appeared Kukusta, after whose name his descendants came to be called Kakustas, the Sean of the Kukusta clan. And the Kukusta's son was Raghu, after whom his descendants were known as Raghavas, the Seans of the Raghu clan. Ragostu putraste jasvi pravriddaha purushadakaha kalma ashapadaha saudasa इत्ये एवं प्रतिथो भुवि. रघु के तेजस्वी पुत्र कुलमाशपाद हुए, जो बड़े होने पर शापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात थे।
Raghu's glorious son, for his part, came to be known on earth by the names of Pravada, Purushkada, literally meaning a man-eater or an ogre, Kalmaspada and Saudasa. Kalmashapada putro abhucha changanasthitvati na nahashrutam yastu tvadihi yamasadhya sahasai anyo veninashat. कल माशपात के पुत्र शंखन हुए, ये हमारे सुनने में आया है कि जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। It has been heard by us that Kalmashapada's son was Shankana, who even on attaining remarkable valor on the field of battle, perished, army and all, in an encounter. Shankanasya tu putro abhuchuraha Shriman Sudarshanah Sudarshanasya Agnivarnasya Shigragaha. शंखन के शूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग थे। The glorious Sudarshana, for his part, was the heroic son of Shankana. Agnivarna was the son of Sudarshana and Shingraga of Agnivarna. Shingragasya maruhu putro maro putrah pashushvaha prashushuvasya putra abhudabarisho mahamatihi. शीघ्रगत के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रक्षुशुरव तथा प्रशुशुरव के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। Manu was the son of Singaraga and Maru the son of Purushrava. The highly intelligent Ambrisha was the son of Purushrava. Ambarishasya putro abhunna hushaha satyavikramaha nahusyasya cha nabhagaha putraha param dharmikaha. अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष थे, नहुष के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। Nahusha on unfailing prowess was the son of Ambrisha, while Nabhaga was the supremely pious son of Nahusha. Ajashva cha suvatra chaiva nabhagyasya sutavasubhau ajasya chaiva धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः. नाभाग के दो पुत्र है, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। Both Aja and Suvratra were the sons of Nabhaga, and the pious king Dasharatha was the son of Aja. Tasya jeshto asi dayado rama ityabhi vishrutah tadagrahana swakam rajyam avekshasva jaganripaha. दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। नरेश्वर, ये अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। You are the eldest son, known all around by the name of Rama. Therefore, accept this kingdom of your own and look after the world, O protector of men. Ikshavakunam hi sarvesham raja bhavati purvajah पूर्वजे नावरह पुत्रो ज्येष्ठो राजभिषिच्यते. समस्त इक्ष्वाकुवंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता है। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। Amongst all the Ikshvakus, the eldest son undoubtedly becomes the ruler. While an elder son is present, a younger son is never consecrated as a king. The eldest alone is so consecrated. Sa Raghavanam Kuladharmam Atmanaha Sanatanam Nadhya Vihuntam Arhasi Prabhutahatanam Anushadi Medinim Prabhuta Rashtram Pritravanma Ahahyashah. महायशस्वी श्री राम रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट ना करो। बहुत से आवंतर देश वाले तथा प्रचुर रात्र राशि में संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। Being one of the Raghavas, you as such ought not to violate today the time-honored usage of your house
according to which the throne goes to the eldest son alone. Like your father, highly illustrious as you are, rule the earth, abounding in precious stones and consisting of numerous dominions. इत्यार्षे श्रीमद्नारायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे दशाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 110 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।